So, from the sandwiches you eat to the traffic signs you see on the roads to the yummy nachos and to the structures like bridges and buildings, triangles are everywhere, right? So all these triangles have lot of interesting properties. So in today's episode of Concept Bites, we are going to learn about one such property called angle sum property. Yes, तो triangle जितना भी छोटा हो या जितना भी बड़ा हो has to follow this property. Okay, now what is this property about? Let's dive into it. So I'm your teacher Arsh and let's get started. Now before we move on to this amazing property of triangles, let's understand what is the classification of triangles. This is the part that we have already covered in the last episode of Concept Bites. So अगर classification की बात करें तो triangles can be classified on the basis of their sides and on the basis of their angles. अगर sides की बात करते हैं तो तीन type के triangles मिलते हैं हमारे पास. First triangle is called scalene triangles जहाँ पे all three sides are unequal. The second type that we have over here is isosceles triangle where two sides of the triangle are equal. And the third type is equilateral triangle, which is a very special triangle because all three sides of this particular triangle is equal. Okay, चलो अब बात करते हैं classification on the basis of the angles. Again, we have three types of triangles with us. First triangle that you can see over here on your screens is called acute angle triangle. Why? Because all three angles are less than 90 degrees. Correct. The second type over here is right angle triangle where one angle of the triangle is 90 degrees. And the third type is called obtuse angle triangles where one angle has to be greater than 90 degrees. Chalo, now I have a question for you. I'll show you one figure on the screen and you have to find the value of this pink angle. Now to find the value of this angle, there is something that you need to understand. There is something that you need to understand about the relationship between these three interior angles of the triangle, correct? तो चलो उसको समझते हैं. अब उसको समझने के लिए observe this triangle carefully and observe here what I am doing. राइट तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे आपको तीन एंगल्स दिख रहे हैं तो आई हैव मार्क दीज थ्री एंगल्स एंगल 1 एंगल 2 एंड एंगल 3 ठीक है दीज थ्री आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल अब मैं क्या करने वाली हूँ एक छोटू सा कंस्ट्रक्शन करने वाली हूँ मैं क्या करूंगी मैं एक लाइन जो है ड्रॉ करने वाली हूँ विच विल बी पैरेलल टू दिस बेस ऑफ द ट्राइंगल द बेस BC ऑफ दिस ट्राइंगल नाउ व्हाट डिड आई डू आई कंस्ट्रक्टेड दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन BC ओके सो ओवर हियर DE is parallel to BC. कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन करने से हमें कोई नहीं रोक सकता करेक्ट अच्छा यहाँ पे जब मैंने लाइन ड्रॉ किया आपको कुछ एंगल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं देयर आर टू एक्स्ट्रा एंगल्स दैट वी कैन फॉर्म ओवर हियर I am naming this angle as angle 2 or we have this angle 2 with us so I can name it as angle 4. I can call this angle as angle 5. Correct? We can do that. Now since we have studied lines and angles, right? In the previous classes, we have studied about lines and angles and we know that when two lines are parallel and there is one transversal which cuts both the parallel lines, there are few angles that are formed and they are equal, right? So over here, if I ask you the relation between angle 4 and angle 2, what will you tell me? I'll say angle 4 is equal to angle 2. Now you have to give me the reason about it. Let me know in the comments, okay? So angle 4 and angle 2 में क्या relation है? Yes, they are equal, but why I'm calling them equal? Why? Because they are the alternate interior angles, and when the lines are parallel, alternate interior angles are always equal. That's what we studied in lines and angles chapter. Correct? Okay. Similarly, I can say the same thing about angle 5 and angle 3. Correct? So I can write here angle 5 is also equal to angle 3. The reason is same. Alternate interior angles. Correct? एकदम करेक्ट है ना यहां तक सबको समझ में आया अब अगर आप ध्यान से देखो इफ यू लुक क्लोजली ओवर हियर एंगल 1
angle 4 and angle 5, all these three angles, they are lying on the same straight line. तो straight line के ऊपर lie कर रहे हैं तीनों के तीनों angles, तो इसका मतलब इन तीनों angles का sum बनना चाहिए straight angle के equal, which is 180 degrees. So over here I can say that this angle 4 plus angle 1 plus angle 5 has to be equal to 180 degrees. Correct? Yes, bilkul correct. Now, if I replace angle 5 and angle 4 in this particular equation, what do I get? चलो, angle 4 को मैंने replace कर दिया angle 2 के साथ. क्यों? Because I know that angle 4 is equal to angle 2. Angle 5 को मैंने replace कर दिया angle 3 के साथ. Again, because these two angles are equal. And I am writing angle 1 as it is. So, the right hand side won't change. So, right hand side पे आ गया हमारे पास 180 degree. So, what did you observe here? Ma'am, these three angles, these three interior angles of this triangle, इनका sum 180 degrees आ गया है. Yes. तो इसी को ही तो बोला जाता है angle sum property, and this is true for all the angles in this universe. All the triangles in this universe, correct, right? So all the triangles will have these three angles, and the sum of these three angles will always be equal to 180 degrees, correct? बहुत आसान था, आपने इसका प्रूफ भी कर लिया. नाउ दिस इज व्हाट यू हैव प्रूव्ड. आपको अब हमेशा बोला जाता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि ऑल थ्री इंटीरियर एंगल्स विल सम अप टू 180 डिग्री, बट ये आया कैसे है दैट यू हैव ऑल्सो अंडरस्टूड इन दिस पर्टिकुलर क्लास. ओके, चलो बहुत बढ़िया है. तो यहाँ पे ग्रीन एंगल्स आर इक्वल, ब्लू एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड 1 + 3 + 2 विल फॉर्म 180 डिग्री. द सम विल बी 180 डिग्रीज. ठीक है, जैसे हमने पीछे देखा. आई थिंक दिस इज क्लियर. तो फटाफट से विजुलाइज भी कर लेते हैं. तो एक प्यारी सी जिफ है आप लोगों के लिए ताकि आप अच्छे से विजुलाइज कर सको. तो इसको विजुलाइज करके भी देखो तो ये तीनों एंगल्स जो हैं 180 डिग्री ही बनेंगे. ठीक है, चलो अब एक और तरीका है. एक स्टेटमेंट ये ध्यान में रखना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल ये होता है द सम ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये आपको बता दिया गया है. एंड देयर इज वन अनदर वे टू विजुलाइज दिस. अब ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि आप अपने घर पे भी परफॉर्म कर सकते हो. टेक अ ट्राइंगल, मिड पॉइंट्स बनाओ, ट्राइंगल को फोल्ड करो और देखो कि ये एंगल्स एक्चुअल में 180 के इक्वल आ रहे हैं कि नहीं. ठीक है, नाउ दिस इज एक्टिविटी दैट यू कैन परफॉर्म एट योर होम्स. एंड देयर इज वन क्वेश्चन दैट आई वुड वांट टू सॉल्व विद यू. ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी. ठीक है, चलो अब फटाफट से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x इन द गिवन ट्राइंगल. नाउ ओवर हियर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द x. अब मैम बिल्कुल हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि अब हमें इन तीनों एंगल्स के बीच में रिलेशन पता है. हमें पता है कि ऑल थ्री एंगल्स, ऑल दीज थ्री इंटीरियर एंगल्स will have the sum equal to 180 degrees, correct? We know that. So similarly we can write it over here कि x plus x plus x will be equal to 180 degrees. That means 3x will be equal to 180 degrees. तो x का वैल्यू आ जाएगा 180 divided by 3, that is 60 degrees. तो क्या आप मुझे फटाफट से बता सकते हो ये तीनों एंगल्स जो ट्राइंगल के हैं वो इक्वल हैं और वो 60 डिग्री हैं. तो इस ट्राइंगल का एक स्पेशल नेम होता है. कैन यू नेम दिस ट्राइंगल एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स. नाउ देयर इज वन मोर एग्जांपल that I will be giving you for your homework question. Now this is the question for you to solve and let me know the answers in the comments. So over here you have to find the value of unknown x again. Okay, आपको यहाँ पे x का value निकालना है. So this is your homework question. Alright, so with this note, I'm ending this class. I hope this concept was crystal clear to all of you and you really enjoyed the session. Okay, make sure everyone you like the video, subscribe to the channel because you all know that we provide you the best quality content here on this channel. Correct? So now in the next episode of Concept Bites, we will be learning about something interesting. Okay, so make sure you stay tuned and lots of love. Keep learning with Byju's.